वो क्या कर रहा है, तो तुम उसको वर्ब बोल सकते हो। अरे भाई तुम मत, ओके इट इज अ गुड इन्वेस्टमेंट। ऑडियो क्वालिटी तो ठीक अच्छे तो मैंने देखते हो एबे देख काले देखना ग्रीन कलरटा हाँ ग्रीन कलरटा यस बाकी आगे चेंज होगा बिकॉज ପରେ ଶିଖେଇବି दैट्स 101 मास्टर क्लास ତମେ ଯଦି ଗ୍ରୀନ ଟୋପି ଗ୍ରୀନ ଚେୟାର ପିନ୍ଧିଦେବି ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାଟା ଦେଖାଯିବନି। ଆପଣ ଗ୍ରୀନ ଚେୟାର ପିନ୍ଧିଲେ ଆପଣ ମୁଁ ମୋର ଖାଲି ମୁଣ୍ଡଟା ଦେଖାଯିବ। ଗ୍ରୀନ ରେ ପୁଣି I have adjusted to this green ନା ଯଦି କାନ୍ଥ ଗ୍ରୀନ ଯଦି ଗ୍ରୀନ କାନ୍ଥ ହିଁ କରିଦେଲୁ ତୁ ଦରକାର पूरा ग्रीन स्क्रीन तू चाहे ब्लू स्क्रीन भी कर परियो कांतडा ब्लू कर तू एटा एडजस्ट कर दो ब्लू दा पिंक रेड सब होई ସେଟା परियो हां ମତେ यस सब ताको तो कोऑर्डिनेट कलर कर କେତେ କହିବି କୋଉ କଲରଟାକୁ ୟୁଜ हां यस कोडा ग्रीन टा यूज कर एथि पई बिकॉज़ ग्रीन इज अ प्राइमरी कलर ना तो आउ कार के शेड्स न थाए ग्रीन रे फॉर एग्जांपल मु एने जदी मु रेड टा को करबी देयर आर सम शेड्स ऑफ रेड इन माय स्किन आल्सो ना यस तो मोर भाबे दे चिक्स ओडा उड़ी गला भाई आई ब्लश्ड एंड चिक्स गॉन खत्म हो देखो देखो तो बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सेंटेंस माने एक्टिव रु पैसिव करबा हमें ओके का खाली किछटा आगो बुझी देबा केमती होची तापरे करबा स्टार्ट करबा फॉर एग्जांपल भाबे दे एठी सेंटेंस हला द यंग पीपल वॉच द आईपीएल सीरीज इन द स्टेडियम यंग पिला देखछन कोन आईपीएल देखछन स्टेडियम रे एबे we are basically changing the object and the subject तो एक्टिव पैसिव रे हम कोन करछे ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट रो पोजीशन टा चेंज करछे कोथरे सेंटेंस रे व्हिच इज द ऑब्जेक्ट हियर ना आईपीएल सीरीज चलजी स्टेडियम रे सेडाला ऑब्जेक्ट तो आईपीएल से आउ से माने वर्ब की हमर वॉच चला हमर वर्ब चला हमर कोन वर्ब राइट कोन करछंदी एंड सब्जेक्ट इज यंग पीपल आर मोर सब्जेक्ट फाइन तो मु कौन कहली कि मु सब्जेक्ट आउ मोर ऑब्जेक्ट को मु इंटरचेंज कर देबी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज कर दी माने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रे आईपीएल सीरीज तो आईपीएल सीरीज ता देखा होची की देखछन तको यंग पीपल तो आईपीएल सीरीज इज बीइंग वॉच्ड और इज वॉच्ड बाय द यंग पीपल इन द स्टेडियम अच्छा बीइंग केता लिखथना जदी यंग पीपल आर वाचिंग लिखथंदी मोटी कोन लिखथंदी young people are watching man right now they are watching and present continuous जे था ताले सेईटा को पैसिव करतले सेटा ना being watched त कहै था being watched एटा जेहेतु प्रेजेंट कंटीन्यूअस रे नाही खाली वॉच लिखाइ छै त माने सिंपल प्रेजेंट रे छै एटा कोन अछि सिंपल प्रेजेंट रे छै बिकॉज़ इट इज इन सिंपल प्रेजेंट हम एटा को इज वॉच्ड लिखतले ताले सिंपल प्रेजेंट रे थिला बेले सेठी कोन हे जो ना इज और वर्ब संगे ईडी लागि जो वर्ब संगे लागिबो Similarly, I would example दबा the policeman has arrested the thief. ए जगह रे policeman is the subject. Okay? आउ से thief हला मोर कोन object. So we are basically changing the subject and the object. Yes or no? आउ has arrested माने सी अरेस्ट करी छि तो चोरटा कोन अरेस्ट हेई थिबो का द्वारा policeman द्वारा तो the thief has been arrested by the policeman. Now understand कि tense टा केमदी चेंज हला has arrested टा को टेंस रछि प्रेजेंट कोन प्रेजेंट जे बट कोन प्रेजेंट परफेक्ट रछि कोद रछि प्रेजेंट परफेक्ट रे एटा को has been arrested हे गला एटा अरेस्ट हे सलेडी से has been arrested my mother purchased a new car now this is in past tense simple past रछि तो सिंपल पास्ट टा कोद रहि जो was purchased is purchased टा कहां हेला was purchased हेला देख प्रेजेंट थिला बोले का is थिला पास्ट को हेला बोले कहां हेला was हेला ना एटा जदी एही था ना माय मदर परचेज्ड अ न्यू कार जो लिखाई छी माय मदर परचेज तो ऑब्वियसली इट हैज बीन डन राइट हो जाई छी माय मदर इज परचेजिंग अ न्यू कार एटा कोइ था is purchasing हेला प्रेजेंट कंटीन्यूअस
तो बीइंग हवा बा द कार इज बीइंग परचेस्ड by being हवा ing लगेले is being purchased by my mother. Okay, fine. Similarly the engineers will complete माने आगु को करिवे, राइट? तो ଏବେ ऑब्जेक्ट था प्रोजेक्ट और इंजीनियर सब्जेक्ट will complete था जो will be completed, तो the project will be completed by the engineer soon. will be completed completing कहीं के हबनी will be completing सेतबेले हम लिखि थांते सेतबेले हमर समय एटा हमर वर्बटा माने एटा कम एटा एटा कोथि अछि सिंपल फ्यूचर रे अछि तो सेति पाइका हमें देखो will be completed कर देले बट जदी एटा is being completed हे थांदा जदी मोर एटा कोइ थांदा will be completing हे थांदा जदी एटा कोइ थांदा the engineers will be completing the project soon जदी इमिति लिखा है था मैं कन्वर्ट करता ना the project will be एटा भी सेम ही रहता था will be completed by the engineers soon. ओके अबे एटा ला कुछ एग्जांपल्स दोची आपको पूरा रूल्स अछि प्रॉपर हमें एठी भूली जीवो गोटे कथा जोटा हम तुम कहूची if you are in touch with English every day then you can depend on something called as spidey senses. Okay, spidey senses basically it's a tingling feeling that okay this is correct समझते था है but don't depend on that if you are not watching a movie series or everything in English every day. If you are not doing that then don't depend on that. Okay, just forget that. डिपेंड हवा कथा नुहे एबे मु तुमको सिखेबी कौथरे केमिते डिपेंड कर बे ताले डिपेंड करिवो कहा पर ना रूल्स ऊपर जस्ट डिपेंड ऑन द रूल्स भूलिबुनी रूल्स भूलियार नहीं गोटे तो अछि भूलियार न जेता देख तो एठे हमें ट्रांसफॉर्मेशन का कहबा એટલે एक्टिव को पैसिव करबा तो हमें कोन कहबा ट्रांसफॉर्मेशन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन एक्टिव वॉइस इनटू अ पैसिव वॉइस. तो एबे भाबी दे if the sentence has a transitive verb we can change the sentence from active into passive only if the sentence has a transitive verb. Now what's a transitive verb सेटा हम बुझिया पड़ो transitive verb माने भाई जहा को हमें कन्वर्ट करि परतबा देखा होउची देखुची सेटा देखुचंती माने सीए सेटा देखुची सेटा तांको द्वारा देखा होउची दैट्स ट्रांजिटिव राइट कि भाई सीए सेटा देखुची सेटा तांको द्वारा देखा होउची त माने तू सार को देखुचु सार तो द्वारा देखि होउचंती बेसिकली that's the thing washed by me बुझी पड़छ तो कौन कहू ट्रांजिशन हवा दरकार verb नहले हम ताको यूज कर परबानी. फर्स्ट कथा हमर स्टेप 1 कोन हबो ऑब्जेक्ट ता कोन हे जो सब्जेक्ट हे जो राइट ऑब्जेक्ट बिकम्स द सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट बिकम्स द ऑब्जेक्ट तापरे इंटरचेंज. ओके ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हबो सब्जेक्ट को हबो ऑब्जेक्ट हबो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हबो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हबो क्लियर नंबर 1. नंबर 2 मेन वर्ब टा को हमें पास्ट पार्टिसिपल रे कन्वर्ट कर दवा. पास्ट पार्टिसिपल माने वर्ब 3 माने कोन v3 रे कन्वर्ट हबो. ओके फाइन. Step 5 the modals also change as modals be third form of the verb. हाँ step 5 वाला कौन modals भी change हबो. एग्जांपल दवा modals मन नहीं modals दिल की बात है दिल की बात है explain नहीं हाँ be being would should एवढाला modals हाँ फीलिंग्स एक्सप्रेस करे यूज करे जाए मॉडल्स बट दिल की बातें कहेंगी हाउ दे हैव दैट क्वेश्चन. माय मदर परचेज्ड अ न्यू कार
एका एको भलसे एकदम पूरा विदाउट मिस्टेक करिया गले ना यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज टेंस व्हाट आर मॉडल्स व्हाट आर डिटरमाइनर्स ये सब जिंस जाने दरकार हैला माय मदर परचेज्ड अ न्यू कार ए परचेज्ड माने मते कह के एटा को टेंस रे अछि पास्ट रे अछि भाई ऑलरेडी पास्ट रे अछि तो पास्ट थिले वाज परचेज्ड हो अच्छा प्रेजेंट रे थिले कोन होता था is purchased right very good so my mother purchased a new car is my a new car is was purchased by my mother right so being lage jodi being da na beta being lage એટલે continuous रे हो थोड़ी एक्टिव टा कंटीन्यूअस थिबो जदी एक्टिव टा कोन थिबो कंटीन्यूअस थिबो ताले विल यूज being here passive रे हाँ परचेज वाज बीइंग परचेज इज बहिगला माने ए मुहूर्त रे तो करछु तमे सेटा प्रेजेंट कंटीन्यूअस रे अछि तो इज बीइंग परचेज वाज बीइंग परचेज हबो माय मदर वाज परचेजिंग अ कार हबो वाज बीइंग परचेज्ड माय मदर वाज परचेजिंग अ कार a car was being purchased by my mother because continuous rachiba being hobo a car my mother was purchasing a car hobo a car was being purchased by my mother being purchased by my mother तब तमे ऐड ध्यान दियो pronoun टा in the subject changes from its object form example I टा कोन हे जिवो me he टा हे जिवो him she टा हे जिवो her they हे जिवो them we हे जिवो us अच्छा एटा आउट जिंस अछि गोटेला फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और गोटेला फर्स्ट पर्सन प्लूरल और गोटेला सेकंड पर्सन सिंगुलर सेकंड पर्सन प्लूरल थर्ड पर्सन सिंगुलर थर्ड पर्सन प्लूरल माने कोन फर्स्ट पर्सन सिंगुलर माने तू जे पर्सन कहूची राइट I is the first person singular first person plural हला के ना we अरे you can first person बा हमें माने तू कहू जे कहू जे से कहू I or you है कि wing होना हां you the second person singular और second person plural भी दीडा काना मु जतले कहूची you are an idiot और जदी कहूची you guys are an idiot ताले मु कहूची बेसिकली सिंगुलर थिला भी you और समथिंग कह जाए तो यू ही कहूची यूज थोड़ी कहूची राइट हाय तो कहला आई टा हैव फर्स्ट पर्सन सिंगुलर वी टा हैव फर्स्ट पर्सन प्लूरल आमे मु कहूची आमे कहूछु तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल माने फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव रो कथाटा कहूची बट प्लूरल कहूची राइट आउ यू टा हैव सिंगुलर भी और यू टा हैव प्लूरल भी का पाएंगे सेकंड पर्सन पाएंगे थर्ड पर्सन पाएंगे थर्ड पर्सन है he she name माने Ram was saying that so that's the third person that means he is not present in the room let us understand from this perspective if in the room mu kahuchi if I am speaking then that's the first person if except me the other guys are speaking who are present in the room same room re present ashandi then you second person and who is third person is not present in the room he she, Ram, Shyam, Satya, which are not present in the room. They, but they को point करची ना. They, those हले तुमको point करची ना. They are present. That person जे, but you are pointing to someone. That means they are present here. Yeah. They are plural थिले. वो तो बुझी बट हाँ देम भी तो तू पॉइंट करिबो ना मु तो कहबो देम तू कोन बुझिबी तू कहबो ना देम बोली का ताले मु जानिबी यू आर पॉइंटिंग टू देम थर्ड पर्सन मीन दे नॉट प्रेजेंट इन द रूम ही इज अ गुड गाय नहीं सेकंड पर्सन से माने ओ तो ये क्लियर है गला डेटा देम हे जिवो सुनो भलसे डेटा कोन हे जिवो देम हे जिवो डेटा ताले कोन हला we टा हला फर्स्ट पर्सन प्लूरल राइट we टा हे जिवो us ओके I टा हे जिवो me she टा हे जिवो him she टा हे जिवो her एग्जांपल सब तो गोटे कर दबा रे
मतलब आउ गोटे कथा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस जेतले हम करूचे बेसिक मीनिंग तार चेंज होबनी जहां माने से रहयो भाई हला तो ये कह दो एमती भाई कार वाज बीइंग परचेज्ड बाय मदर तो मदर वाज बीइंग परचेज्ड बाय द कार ताले सरी गला कथा माने यू कैन नॉट चेंज द बेसिक मीनिंग ऑफ द सेंटेंस राइट द सेंटेंस रो बेसिक मीनिंग जहां अछि से रहया दरकार फाइन तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट तो चेंज न करलु फर्स्ट चैप्टर मिस कर देलु ताले भूले जो ना ओके नेक्स्ट कथा from simple to complex by removing two or two example the man is too poor to pay his bills it is a simple sentence okay what a complex sentence mu etale kahibi the man is so poor that he cannot pay his bills now understand they are the same meaning they are same right ta mane this man is too poor to pay his bills basically the most efficient way to write a sentence or speak a sentence is a simple sentence. The man is so poor that he cannot pay his bills is a complex sentence. You are conveying the same meaning, but you are making it more complex by adding he cannot pay, right? So poor to pay his bills. So that's more simple. Similarly, Sham is too honest to cheat. Two and two. Two out two हमें कहाँ use कर परिवा? Simple रखिए हमें. Complex रे convert करिया फिर हमें कौन करिया? अबे ट्रांसफॉर्मेशन कहूँ माने सब ट्रांसफॉर्मेशन जाऊँ रे सिंपल टाको भी कॉम्प्लेक्स करबा ट्रांसफॉर्मेशन खाली एक्टिव टा पैसिव कर ट्रांसफॉर्मेशन होए सिंपल टा भी कॉम्प्लेक्स हे परिबो ओके सिंपल कॉम्प्लेक्स केम थाओ फर्स्ट टाइम क्वेश्चन 2 आउट 2 करेगी 2 आउट 2 माने भाई 2 2 एका सेकंड यूज करबा ही इज टू ऑनेस्ट टू चीट ही इज सो ऑनेस्ट दैट ही कैन नॉट चीट आर क्लियर कॉम्प्लेक्स एंड पॉइंट्स टू रिमेंबर 2 इज replaced by so and such two टाको हमें कहा रिप्लेस करिबा so और such तरह next infinitive is changed into that plus negative adverb clause of the result माने basically infinitive माने एटा जो अछि ना he is too honest to cheat so that's infinitive माने केतबेले होची कोन होची हम किछि जानि too honest to cheat हम खाली कथा कहि दोचे बट सेटा को हमें कन्वर्ट करछे कोठी ना नेगेटिव करछे adverb को he cannot can and cannot he cannot cheat मोदा क्लियर हो जी नेगेटिव एडवर्ब यूज कर can देख he is too honest to cheat माने she cannot cheat ना सबुथरे एग्जांपल दो ना आवड़े एग्जांपल दे ले तू कहलो ओडे सेंटेंस 2 आउट 2 लगेगी Satya is too lazy to study. Let's say he is too lazy to study. Satya is too lazy to study. हम लिखेगा कौन? Satya is too lazy to study English. और ठीक है टू हमें 2 आउट 2 यूज करछे एबे एटा को हमें कन्वर्ट करिया कॉम्प्लेक्स रे सो हम कहलु कोन करबो so lazy that he can't study. is so lazy Cannot account that छाड़ देलु that he cannot cheat cannot कोन study English हां that लगे मन जदी से एते लेजी जे हमें सेंटेंस कंटिन्यू होने आगो सत्य इज सो लेजी I want to continue the sentence ना जे लगू जो ठीक तू एते अलस जे एडा ही करी भाई तू इंग्लिश पाठ पढ़ी ही पार सत्य इज सो लेजी दैट ही कैन नॉट स्टडी इंग्लिश क्लियर ओके फाइन नेक्स्ट श्याम हाँ हाँ comma Santya is lazy comma he cannot study English hey pariyo but it's not how we transform okay Shyam is too honest to cheat hela okay next by removing enough to two enough टाको कौन करिबा enough to यानी he is tall enough to touch the fan okay he is so tall that he can touch the fan he is tall enough to touch the fan he is so tall
that he can touch the fan. एठी हमें एटा गोटे फर्स्ट हमें बुझले कोन टू टा रिप्लेस करबा कोनटे सो सच आ कोथरे एड नेगेटिव एडवर्ब राइट आ एटा को हमें को करो एटा पॉजिटिव एडवर्ब एटा कोन एनफ टू ना ता माने कोन पॉजिटिव करि पारिबो से एते लंबा जे से फैन टच करि परिबो यदि एटा को हमें एई टू रे लिखबा सेम जिंसटा को कहलु सत्य केम लिखे टू रे माने नेगेटिव वे रे किसी एते छोटा जे गेडा जे छुई परिबो He is too small to. very good he is too small like okay he is too small to touch the fan right तापरे हां द्वार थोड़ी को अरे हां he is too small to touch the fan he is too short to touch the fan अच्छा एटा को लिखले हमें कॉम्प्लेक्स करी he is so small that he cannot touch the fan right एटा ही कॉम्प्लेक्स भाई सिंपल नो एटा हां ए क्लियर हला तो एनफ टा यूज करे में पॉजिटिव एडवर्ब पेंगी आउ टू टा यूज करे में नेगेटिव पेंगी राइट ओके कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव डिग्री ओके कंपैरेटिव टू कोड करबा सुपरलेटिव माने कहलो फास्टर फास्टेस्ट इज द सुपरलेटिव कंपैरेटिव माने मु दिजन को भीतर कंपैरिजन को छी ता टू फास्ट the worth नहीं superlative माने it's like the highest degree thing can be done fine babu is faster than any other boy in the class now this is comparative he is comparing babu with the rest of the class that means he is the best in the class तो सेटा में कौन लिख दो he is the fastest in his class babu is the fastest in the you are converting a comparative sentence to a superlative sentence superlative means highest degree one can pick right gold is more expensive than any other metal gold is the most expensive metal getting my point so comparative माने जतल तार comparison आउ कहा संगे हो थिबो आउ superlative माने there is nothing to compare he is the best वो कथा बुझी परजो सेम जिंस एडा मु एबे ता मन तो बेस्ट वन तो पूरा वर्ल्ड कर देबा फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड कहले पूरा भूल जियो सेंटेंस मीनिंग चेंज हिजो फास्टेस्ट इन द क्लास कहले मीन दैट क्लास इज द फास्टेस्ट सेंटेंस रो मीनिंग सेम रखे अछि तो यदि खाली एति लिख दो बाबू इज द फास्टेस्ट खाली भी भूल जियो फास्टेस्ट माने तू जति की जानि छु दुनिया भीतर जत को जिंस जत को लोक जत को जानवर जत को एलियन समस्त तो फास्टेस्ट बाबू यू हैव टू से कि भाई क्लास रे सही क्लास है एटी कथा क्लियर okay any other or no other is left out गोटे कथा any other ताको तू यूज करिवु नाही फॉर एग्जांपल any other boy in class को हम एठी यूज करले नाही ओके मु एटा को एठी भी any other metal को कोन कली काट देले similarly than is removed the is added before superlative because superlative माने कोन कहलो the fastest right the हमें गोटे the ताजमहल वन पीस खेलाड़ा मतलब कहबा ना रे तो द देन टा को हम कोन कर दबा देन टा को हम कोन कर दबा द कर दबा फाइन ओके ट्रांसफॉर्मेशन टू फ्रॉम पॉजिटिव टू सुपरलेटिव तो हमें सुपरलेटिव पहले गोटे ठीक है रिकैप एक्टिव पैसिव केम कन्वर्ट करथले एक्टिव पैसिव केम कन्वर्ट करथले एक्टिव पैसिव कोन कहा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट उल्टीबो इंटरचेंज हे जो आओ सबु तक पास्ट पार्टिसिपल रहइबो v3 फॉर्म रे वर्ब टा रहइबो कोतरे v3 फॉर्म रे ओके सब सिचुएशन रे खाली पास्ट थिले वाज लागिबो और प्रेजेंट थिले इज लागिबो बट सेठी भी ईडी रहइबो वर्ब संगे ईडी रहइबो अच्छा आउ कोन पढला तमे ट्रांसफॉर्मेशन रे गोटे तो एक्टिव पैसिव आ गोटे कोन तो सुपरलेटिव कंपैरेटिव टू करियो सुपरलेटिव ता पूर्व में पढ़ले टू सिंपल टू कॉम्प्लेक्स यार दीटा पढ़ले हमें टू टा यूज करा जिबा हमें को नेगेटिव एडवर्ब रे नेगेटिव एडवर्ब आ एटा हला पॉजिटिव एडवर्ब एनफ टू हां ओडिया रे दर से फर्स्ट गोटा कथा बुझम you first understand ki the
the process where we translate one language to another language is totally bullshit. There is no such thing that exists because understanding कि भाई यार लिपि ही अलगा, देवनागरी लिपि अलगा भाई, एठी हमर इंग्लिश रो लिपि एकदम अलगा ना. That means जो माने भी इंग्लिश को कन्वर्ट करंती कोथरे ओडिया रे बा ओडिया टू ट्रांसलेट करंती इंग्लिश रे, that is completely bullshit because in order to actually understand the meaning of the sentence you need to think in English. फ्यू अच्छा पिला माने बेबी हमर ओडिया पे प्रॉब्लम है कि से माने फर्स्ट जिंस इंग्लिश रे पढिबे ता माने बुझिया पे कि ताको ट्रांसलेट करिवे ओडिया रे, पुनी लेखला को पुनी ओडिया रे इंग्लिश ट्रांसलेट करके लिखिबे. That process is very complex and it takes a lot of time and it's फालतू complex. You need to read in English, understand in English and write in English. Do not translate that into ओडिया छाड़ ओडिया रे कोन हबो बुझि परछ. सेथि भाई हम कहू छी कि भाबी दे कि द टा कोन हबो ओडिया रे. The has no meaning in Odia. तो मतलब लेटर फ्रॉम लेखा से जो स्पेलिंग का स्पेलिंग दो का कर डॉलर लेते कौन The अच्छा द द बा एलियन नंबर काटन सर एते भी ओडिया मते तिक्की तो ओडिया आछि मते हला. हो हो ये क्लियर हो हो तने हम कथा कहू एडा हला इंपोर्टेंट कि तमे इंग्लिश रे ही भाबी कि इंग्लिश रे लिख दो इंट्रोडा. ओके आउ कोन पढले रे सिंपल कॉम्प्लेक्स परे टू एनफ एडा हला पॉजिटिव एडवर्ब. आउ नेक्स्ट कोन पढले कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव. कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव पढले. कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव कोन कले देन कटि जो द एंड द हे जो एनी अदर सॉर्ट कटि जो मोर सेंटेंस रहिबनी. आउ तोर जो वर्ब ता अछि तार संगे ईएसटी लागि जो फास्टेस्ट लागि जो राइट एति तो. ओके नेक्स्ट पॉजिटिव टू सुपरलेटिव. नेक्स्ट कोन पॉजिटिव टू सुपरलेटिव. पॉजिटिव टू सुपरलेटिव माने नो अदर पोएट इज एज ग्रेट एज कालिदास. कालिदास इज द ग्रेटेस्ट पोएट. द कंपेयर एति देखे हां हां नो अदर पोएट इज एज ग्रेट एज कालिदास. No other poet is as great as Kalidas. हमें लिखले Kalidas is the greatest poet. The meaning remains the same. कोई भी अलगा poet से Kalidas और comparison नहीं करनी. Kalidas is the greatest poet. More clear? Okay. No other metal is as costly as gold. Gold is the costliest metal. Okay. No other, any other. एड़ा सब हमें काट दबा. No other काट दबा. आउ कौन काट दबा? Any other काट दबा. आउ कौन? Okay. आज ना ना ना. आज का कंपेयर को दाड़ लगे ना इज कॉस्टली So costly. Okay. As great. आपको हमें काटी की या बदले हमें सुपरलेटिव फॉर्म टा लिख दो ग्रेटेस्ट. द लगाबो तो as कटी कौन है जो द है जो राइट. as great है जो कौन द ग्रेटेस्ट. as costly टा है जो कौन द कॉस्टलीएस्ट. क्लियर बुझि परछो. अरे इट टेक्स इट खाली प्रैक्टिस करे जा कुछ नहीं हला. हमें सैम्पल पेपर बाहर करिवे न करबा मिस्तो नहीं. सैम्पल पेपर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट. इंटरोगेटिव टू असर्टिव. क्वेश्चन है उसको आंसर में बदलो. डज मैन लिव बाय वाटर अलोन. Man does not live by water alone. Understand, a question does not signify whether the man actually lives in water or not, but the answer has to suggest. But the answer has to suggest कि yes or no. और कथा बुझो आंसर क्वेश्चन का आंसर मिलिया दरकार. हमें एटा ऐड करियो. Whatever you write, it's correct. Man does not live by water alone. माने कौन जो कौन होतरे आइडो कहले बा कि भाई डिक्लेरेटिव माने आंसर. इंटरोगेटिव माने आस्किंग अ क्वेश्चन. आंसर टा को एडजेक्टिव कहबा. एमिति हु कैन डिनाय द फैक्ट. नो वन कैन डिनाय द फैक्ट. अब मु एटा को आउ प्रकार भी लिखि परिबी. एनीवन कैन डिनाय द फैक्ट. सामने नेगेटिव रहेगा हु कैन हां ही कैन लिख परिबी. ही कैन डिनाय द फैक्ट. दे कैन डिनाय द फैक्ट दे कैन डिनाय द फैक्ट. राम कैन डिनाय द फैक्ट. माने नेगेटिव और हां अच्छी माने नेगेटिव भी करते हैं पॉजिटिव भी करते हैं राम इच्छा हम इच्छा. नेक्स्ट an affirmative question becomes a negative statement. A negative question becomes a positive statement. An affirmative question
बा कहले affirmative no सेटा assertive affirmative माने is she the is she the most confident person around? No, she is not the most confident. yes or no रे तार तो एवढा आंसर नो नहीं आंसर नेगेटिव कहीं एटा तो एटा अलगा थिला ना इंटरोगेटिव टा assertive करिया थिला हमको एटा किछ भी कर परिबो Affirmative जो question पता तो ओके like नो हेडा सेटा affirmative न होना एटा इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव माने क्वेश्चन assertive माने आंसर अरे भाई हां जानिया चाहूची अरे मु कहि दोस देख इंटरोगेटिव वर्सेस assertive वर्सेस affirmative वर्सेस affirmative माने भाई तू ऑलरेडी तुमको थोड़ा आइडिया है उसके बारे में देख assertive sentences are commonly known as declarative sentences माने आंसर दो तू राइट these are the most commonly used sentence in the language next वाला affirmative sentence that gives a positive sense that gives what माने positive sentence माने yes no yes वाला affirmative सत्य तो लेजेस्ट बॉय से के जो पास नेगेटिव सेंटेंस सर affirmative कोड़ा कोड़ा का से जो अपन जो Sir. पढ़ोतले हाँ कॉल लिखा becomes a negative statement becomes change होची सर ताले माने इस सत्य तो लेजेस्ट बॉय के क्लास नहीं इस सत्य तो मोस्टली हाँ तो कौन देखो नो is हे गेले इंटरोगेटिव हिजो इज बाय बलिया ना is ना is नो माने क्वेश्चन पचारि उनी अब कौन करा से affirmative एटा इंटरोगेटिव टू असर्टिव अफर्मेटिव छाड़ दे में जाई नहीं सेठी नहीं सेटा हैला था तळु को अच्छी पॉइंट्स भाई अफर्मेटिव टू नेगेटिव देख बुझी भी अफर्मेटिव को अब इंटरोगेटिव टू असर्टिव बुझी इंटरोगेटिव माने क्वेश्चन असर्टिव माने आंसर बुझी बात सिंपल assertive नेगेटिव आंसर पॉजिटिव आंसर दिले जाते दीटा को दे परिबो आम इच्छा अफर्मेटिव टू नेगेटिव खाली जदी बुझी पाना अफर्मेटिव माने कोन ही एग्जांपल द्वारा जा as soon as the students saw the teacher they rushed to their class no sooner did the students see the teacher than they rushed to the class एबे एटे बुझिबा वाला हां नाही अफर्मेटिव माने इट्स अ पॉजिटिव सेंटेंस तंगो से पॉजिटिव केमति हला जे तो भागी पळेले सेंटेंस रो मीनिंग को जाओनी एठी आमे कहूची कि जेत टीचर देखु देखु समझ भाई क्लास को दौड़ी पळै जंती ताको आमे चेंज करछि जेपर्यंत टीचर देखि नथले से माने केही क्लास को जानि नथले तो देख सेंस बदली गेलनी कथा रा उल्टा केम थला मीनिंग तो सेम हैला बट द वे आई एम प्रेजेंटिंग इज डिफरेंट फॉर एग्जांपल हां कि माने कि भाबी दे टीचर को देखु देखु पिला माने क्लास को दौड़ी पड़ेले पिला बड़ा एते खराब हैला जेपर्यंत टीचर को देखले सेपर्यंत क्लास को गले अच्छा गेटिंग डायरेक्ट के बेसिक खराब है उसमें हाँ हाँ तो बस एटा था एटा हमको नेगेटिव रे चेंज करछे कि नो सूनर डिड द स्टूडेंट सी द टीचर दे रश टू देयर क्लास वे एटा कोन हो ही इज अ फास्ट रनर राइट ही इज अ फास्ट रनर so it's an affirmative and positive sentence इज अ फास्ट he is not a slow runner पॉजिटिव again the not लगे दिलो it's a negative नॉट ए स्लो runner so it has the same meaning understand because when we are transforming a sentence to another sentence we have नेगेटिव एडवर्ब लागिवो खुद रे नेगेटिव को कन्वर्ट कला बट मीनिंग सेम सेम रहा दरकार अरे जोटा भी वर्क सेटा बोलते तो एग्जांपल दो सत्य इज द लेजिएस्ट बॉय इन क्लास सबको हमने किन कांड कर नेगेटिव रे इज नॉट द मोस्ट डिसिप्लिन्ड बॉय इन द क्लास हां लेजी और डिसिप्लिन्ड हां तो सेटा मु कहू मीनिंग सेम रहा दरकार एग्जांपल दबा affirmative word is removed opposite of the keyword is used keyword जेन मु कहले जेन कहले हमें हां verb रो opposite टाइम दबा lazy टा है जो discipline right ता माने you need here antonyms of words to do this हां a few टा है जो not many देख a few टा है गला कोन not many as soon as टा है गला no sooner than always टा है जो never all है जो none everybody है जो nobody everyone है जो no one right
ଗୋଟେ एग्जाम को सेंटेंस एवरीवन को नेकी Everyone को नहीं, everyone एवरीवन वेंट टू द पिकनिक एटा को कह कि नॉन नॉन को यूज करी हां नॉन एवरीवन दा नॉन हो ना Body. everybody went to the हां picnic. एवरीवन दा Everybody joined the class. Nobody. yes nobody was absent in the class Everyone, everyone went to picnic nobody missed the nobody picnic missed the picnic. All the questions. Oh. all ro कहले all ro The sentence was with all All of people. them were good students. bad students Bad as Satya. नहीं bad. Bad like Satya. अबे तू कहले all students are good students ताले no none of the students are bad students And I have तामरे तू कौन कहले good रा एंटोनी वाला सत्य bad like Satya. आपको summarize कर दो. अच्छा ये क्लियर है ओके नेक्स्ट को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस टू एक्सक्लेमेटरी माने कोन कहलु जतरे हेवी फीलिंग्स थिबो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस माने जतरे कोन थिबो हेवी फीलिंग जो कोई भी इमोशन डिस्चार्ज को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलेंगे मतलब God Satish dead. हाँ बस सही बड़ा है इट्स अ वेरी प्लेजेंट वेदर व्हाट अ प्लेजेंट वेदर इट इज राइट it is a very pleasant weather what a pleasant weather it is nice of you to help me how nice of you to help me right basically you're adding feelings there नहीं बेसिकली एटा एटा हम मिसिंग थाए जो माने आम स्टूडेंट्स माने रीजन कोन हां लेट्स से कि तू ओडिया रे गोटे कथा कहू ओके अरे भाई कौन हैला आज आम क्लास रे टीचर एमती कहले सेमती कहले हम कहले इंग्लिश रे कह हैला नो अंडरस्टैंड योर प्रेसिंग कौन हैला हो एमती कहले सेमती कहले यू आर एडिंग इमोशंस बट वी वाज saying the same thing in English. Do you know what happened today? This happened. The teacher came. It's very bland, both bland, right? But if you look at your TV series and people whose first language is English, they always add emotions in English, na? You know what happened today in class? Mane, you are adding emotions. So if you are conversing in English, it's very important for you guys to add emotions to those sentences. Otherwise, it's just a translation. Emotions are in Odia, but English I am लिख दोजे कह दोजे no feelings in English. what clear? Oh, एबे मोर कहया था हला कि 80 एक्सक्लेमेटरी कम केला में फीलिंग्स ऐड करियो राइट हेवी फीलिंग्स ऐड करिया very is left out in the exclamatory sentence okay very nice अब how nice Nice of you to help me. how very nice of you to help me कुहंती स्पोकन इंग्लिश रे स्पोकन इंग्लिश रे सबटाइटल स्पोकन इंग्लिश रे कुहंती बट नॉट इन ग्रामर इंग्लिश रिटन इंग्लिश एटा अलगा अलगा जिंस देख ऑब्वियसली ना तू तू रे जहा जहा ओडिया रे कहू छु ता कोन ओडिया लेखला तार लिटरेचर लिखछु की सेंती तू इंग्लिश रे जहा जहा यूज करछु लोक मन से कथा हो जोडा सेड मन थोड़ी लिखिबो राइटिंग इंग्लिश रिटन इंग्लिश I gotta go. How are you? How are you? How you doing? Howdy. हाँ howdy. एमती माने basically यार slangs ना. तब कौन कौन का slangs का? वैसे slangs रे भी हमारा meaning अलग आची. लोग कौन भावंती खराब भाषा को slang को जाए ना ना. Unofficial language को slang को जाए. Okay. Next, it clear? आगो जीवा. Very is left out in the exclamatory sentence. Exclamatory very nine. Very does not exist. Full stop is replaced by a mark of exclamation. Obviously, exclamation mark. Feeling add करछे बा. Right. Basically देख. What टकु मु heavy feelings से तो what कह देबी what. Same sentence. Say खाली exclamation add more heavy feelings to the sentence. Okay. For example, let's say तू गलु बाबा कर गाड़ी भांग देलु. बाबा को मैसेज कलु फादर आई ब्रोक योर कार. बेसिकली रिसेंट घटना मो लाइफ रे तो मो भांग नथले सान में भांगतले बट आई हैव टू टेक रिस्पांसिबिलिटी ना सो कोन लिखबी मु योर कार इज ब्रोक डाउन फादर्स रिप्लाई ओके 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 सेमिति खाली ओके बदल रे लेट्स से आमे कहि देले खाली व्हाट लेट्स से व्हाट की लिखबो व्हाट I mean, he is fine. So he is saying, okay, it's not a great deal. What?
तो फिर तुम निकलो, अभी बाहर निकलने का समय आ चुका है। ना तुम और मेरे बेटर है नहीं बेसिकली the conveying, because the words cannot speak to you, right? What the writer has, what feelings that writer has when he's writing the sentence, it does not contain those um, bits and pieces of emotions. So we are basically using an exclamation to show the heavy feeling. Now if I'm saying कि how beautiful she is and I'm doing this, that means I'm adding all those feelings that you feel when you feel someone is beautiful, right? And if you're angry and you're putting this, what are you doing? That means your mind always takes those things when someone is angry and you're converting those feelings. So that is how efficient it is to put an exclamation mark, right? Okay, how? Are you doing homework? Okay. So what and how is placed in the beginning of a sentence? What is used with a noun, whereas how is used with an adjective. What टा कहाँ से यूज करियो? Noun सहित. And how टा को यूज करियो कहाँ सहित? How beautiful, how simple, how you doing रे? How you doing रे? Exclamation केम दो? बस ऐसे करेंगे। Then how you doing रे? हाँ? How did he get exclamation करियो? How? Howdy. Howdy. हाँ, howdy रे करियो exclamation. Howdy is basically hi in California. Hey, how are you doing? Howdy टा हला hi in California. In California जो cowboys, right? The words of the exclamation oh, ah, alas, hurry are used to express the emotions. Alas means finally. At last. At last, right? It does not work. No, it's used by poets, na? Poem reason no. Alas, the boy went to the sky. Right? Right. Basically he wanted to fly. So alas, he went to the sky, but as dead. Okay, next jiba. Transformation from simple to complex. From simple to complex. So complex to simple तो करते हैं हमें. Simple to complex करेगा. Simple to complex को हाँ, हमें simple to complex ही करते हैं. Yes. He by expanding a word or a phrase into a noun clause. I heard the news of his arrival. I heard that he had arrived. Simple to complex. हाँ, simple to complex, but हाँ. Complex तो नाम है तो. I heard the news of his arrival. So news and arrival, they're connected. Complex is basically splitting two different emotions. And let's say I heard that he had arrived. I am pointing to the subject two times here. I heard that he had arrived. I am pointing to the subject one time here. I heard the news of his arrival. Getting my point? Example. The news of his death made everyone sad. एटा केमती କରିବାକୁ? News of his death made everyone Sad. एठी न्यूज़ टा सेम ही News रहइबो. of his death Had made everyone sad. extra word he had. हाँ, Yes. हाँ. Okay. So that he had died made everyone sad. Okay. अच्छा सॉरी, एटा आबे उल्टाटा चेंज करले. ऑफिस टा चेंज होबो ना. एटा कोन चेंज होबो? ऑफिस टा. The news that he had died made everyone sad. Office एटी गुडी अछि, एडी अछि ना. That he had. Office टा कोन चेंज करले आबे? That he had. Seemti the news that he had died made everyone sad. That he had died made everyone sad. Office टा चेंज होछि कोथरे? That he had. By expanding a word or phrase into an adjective clause. Okay, an honest man needs no evidence. A man who is honest needs no evidence. Basically, गोटे word बा phrase को adjective clause रे convert करछु. What's an adjective clause? An honest man. A man who is honest. An honest man रे honest एठी adjective. And we are expanding on that. गोटे भलो लोको, गोटे लोको जे भलो. गोटे लोको जे कि भलो आ गोटे भलो लोको.
सेम जिनस बट ताको आमे लिखुचे एटा को कॉम्प्लेक्स करिया पे कि भलो लोक गोटे लोक जे कि भलो से ता करे गोटे भलो लोक एया करे गोटे लोक जे कि भलो से एया करे an honest man needs no evidence a man who is honest needs no evidence the lady in the red dress was very smart Who was dressed in red? who was in the red dress was very Who smart was dressed in red? say it spoken english a lady First sentence is achieved for a complex equality. So, M is set up all the no evidence. No need evidence is needed if a man is honest. no evidence is required no evidence is needed if a man is honest Complex is very complex passive है ना उल्टा है जो तो ऑब्जेक्ट को कोई ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस क्वेश्चन टेक करियो चलो क्वेश्चन करे एक्टिव पैसिव ऊपर चलो देखिए कितना तुम समझे कॉपी में लिखो वी शुड नॉट एनकरेज इनडिसिप्लिन गोटे क्वेश्चन कर बेटे हां ठीक है गोटे खाली आंसर लिखो वी शुड नॉट एनकरेज इनडिसिप्लिन लिखी खाली कहि दिया हां तू कह डिसिप्लिन एक्टिव पैसिव passive. वीटा कौन वीटा को तो चेंज हो देखो आसरे तो ऑब्जेक्ट क्या सब्जेक्ट क्या वीटा सब्जेक्ट इनडिसिप्लिन कहाँ कौन आंसर का हाँ indiscipline should not be encouraged by us have some confidence next Soham we will not admit children under 10 under 10 will not be admitted. okay next Abhipsha we must listen to our teachers teachers should listen to us तो मीनिंग चेंज गला अरे भी तो सूप था भाई आ वो हेलिकॉप्टर ठंडा बना आनी थी इधर जलजीरा बड़े Teachers should always respect. ना बेटा अभी से कुछ तार क्वेश्चन we must listen to our teachers आवाज तक कौन वीटा अस है जो आवाज तक कौन देयर नहीं आवाज में हम सेंट रखे लिसन टा कहीं तो लिसन टा must listen टा must be listened Teacher must be listened to us. by us हो ना must be listen टा कौन है परिबो listen टा कौन है परिबो heard है परिबो बेटा तो ये माने वर्ड All the चेंज changes achieved. वर्ड चेंज जो हर्ड वर्ड चेंज जो मीनिंग सेम रहेगा करना आई थिंक इट्स इट डिफरेंट हबो listen to by us Who by us? हाँ must be listened to listen to by us listen to माने listened to टा रो चेंज हब नहीं listen to टा हला कौन कहलु गोटे बोली का भाबे दे सेटा केमते हबो our teachers must be heard बट सेटा कौन कहलु टिकेट टिकेट सेंस चेंज हो इस तरह टी मीनिंग चेंज हो heard heard माने से लाइक टीचर्स आर लाइक नो होप भाई के सुनना no hope must be heard our voices must be heard like the mana rally kurchin एक बात है right सेमती है मीनिंग चेंज yes yes listen to the listen अच्छा এটা सॉरी यार मयूकिरा the mother looked after the boy looked after is one word जिमते listen to गोटे word थला right ता बारी बा हां Why did you write down silence, please? हां Mother looked after the boy. the mother looked after the boy looked हला को टेंस रच मत कहलु फर्स्ट First. तो सेटा कोन है जो
चले ये तो बोला looked was looked हवा ना कौन हवा बेटा the boy was looked was looked after after by his mother. by his mother very good by the mother लिखा है the boy was looked after by the mother the mother इतने में लिखा हो that means the mother must be someone let's say की नहीं पारे the sense can change entirely let's say कि गोटे हमें nursery को चाहिए जो orphanage भीतर है now that person is everyone's mother yes seven sisters mother नथान जे but मु तांको कथा कहूनी I'm talking about an orphanage father national father No. I'm talking about an orphanage. Not a Christian orphanage. Any orphanage, a woman who looks after the children is termed as mother, na? Sethipai. The boy was looked after by the mother. Okay, Satya again. He taught me how to read Persian. Persian taught me how to read. Persian. language बुद्धि हाँ. he taught me He टा कौन मत कहली. Him. I nice Persian I was अरे I was taught to read Persian by him. I was taught how to read Persian by him. How to achieve? I'm sorry. I was taught how to read Persian by him. Okay. Soham. नहीं active voice से convert करिए. She was sent an invitation by them. they sent an invitation To her. To her लिखा ही नहीं. They sent her an invitation. They sent her. नहीं ठीक है वजह but it's more complicated अधिक accurate है. sent her and Okay. she was sent an invitation by them They sent her an invitation. एटा सही वाले आला जोड़ा एटीएम में कोतले. He taught me how to read Persian. sir पूरा फास्ट Hmm. फास्ट प्रेजेंट करबो कि फास्ट केमती जे तोर एटा पास्ट रे अछि तो हेति का was sent हला ना. Next. ग्रामर टा केते मान रहल मुझे नहीं. समान एटलीस्ट 24 तो लगी आछि जो बाहर से जा रहा हूं 6 to 5 marks 5 to 6 marks बाप रे एंट्री. हाँ. Prepared no. Oh. क्या बरी अभिषेक. Yeah, you will be served lunch on the plane by the cabin crew. हाँ. You will be माने you will be. उटा कहाँ हो? You टा you ही रहेगा ना. Because let's say we are talking about an air hostess. cabin crew serve lunch to you Cabin crew will serve will serve the lunch. to on you. the plane the cabin crew will serve you lunch Will serve you lunch. The cabin crew will serve lunch to you on the plane. you will serve अरे ठीक अच्छी ना ठीक तो हला. The cabin crew will serve lunch to you on the plane. you will ए टाकू गया दी था तमे ना से तर भाबी दितला ठीक टाकी भाबितला. नेक्स्ट मायुकी कहतला मायुकी Plus 5 rupees 1000. police find him 1000 rupees reckless driving हाँ. Okay, story by Satyaka. You will be told your results next week by the school. এটা बहुत honesty আছে এই গানের question You will be told your result next week by the school.
Result will be declared by the site. Like सब्जेक्ट है you, ऑब्जेक्ट है your results. The school is भाई सेट this by the school ही रहेगा. subject पूरा change next week. Your results Your result will be object. Your result will be told where the buy me as well. तो the school will start कर. हाँ. School Will tell your result next week. to you and will the हाँ ठीक है. The school will tell you your results next week. तू यू टर्न ना लिखेगी एडा सेम प्रकार ऊपर भी करते ना. The school will tell you your results next week. Okay, एडा क्या रहला सत्य रहा. Okay, Soham. Rashi was scolded by the teacher for not completing her assignment. Object or subject का होगा? Rasi होची subject, teacher होची object. The teacher scolded Rasi for not completing her assignment. Transform the following into interrogative. Abhipsha. He has been living in Meerut since 2006. Interrogative करिवा. Adjective होची. एडा adjective अछि. Has been living in Meerut. Question mark. Ish Raja. कौन कुछ कौन? sign Meerut since 2006. Is he living in Meerut since 2006? Has he been living in Meerut since 2006? एटा has he been काई एथि पहला कारण एथरे ऑलरेडी has अछि ना has been. तो एटा एमित हबो. Has he been living in Meerut since 2006? He is ta is he है जो. He has ta has he है जो. Mayuki का. Everyone knows Tendulkar. हाँ. Who knows Tendulkar? Does लगी कौन कुछ का. हम तो पत्थर जो होते ना but it answer है everyone knows Tendulkar. Does anyone know Tendulkar? Who does not know Tendulkar? Who does not know Tendulkar? who knows Tendulkar is Who knows who Tendulkar is? But it who does not know Tendulkar? ये Tendulkar को जाननी. हमें नहीं जानना. मारी बारी. Complex रे convert करो. With your permission, I will go away. Comma शिमचुरे. जोड़िबु complex करिबो. that like it will be Without your permission. Without your permission, I will not go away. But तो एटा complex रे convert करछु ना. तो एटा को sentence रे meaning change कर दोछु. With your permission, I will go away. बुझबाऊ. तू जोड़ा कहूछु सेटा हला कोन कहलु changing into negative. Primitive negative. एटा हमें कहूछु खाली complex convert करिया. या माने that तू यूज करी करथले. Permit me, I will go. Permit me, I will go. Permission and permit है. एटा ठीक नहीं. काट दा बेटा. Translate as well. हमें teacher सब सिखाएंगे. हाँ? Google Translate as well. तो translate में go भाबुसले की इंग्लिश का माने क्या पता ताकि माने इंग्लिश सीखा करना ताकि भाग पंखा है वो बाहर दे सके मैं तो ऑलरेडी लोग से तो मुड़े नहीं હું બુझिली but तो point હું બુझिली कि technology is there to support us but don't you think it will be weird if you really want to have a conversation with someone and you need a translator to do so. Let's say I have come here to visit you, okay, and you need to have a heart-to-heart conversation with me, but तुम्हारे बीच में फोन है. अबे ट्रम्प है तो सर बताओ ताकि हार्ट टू हार्ट टाइप ऑफ नहीं मैंने ट्रम्प संगे नहीं. In order to really have any kind of bond with someone,
you need to have deep conversations, and it can only happen if you don't have a translator. At least the prerequisite is you don't have a translator. And let's say a foreigner comes here, okay, and he's in our class, but every time you want to converse with him, he needs a translator. You will never be good friends with him. Same thing to you also, na? तू सीखिबू ना कुछ बा फॉरेन वाले सीखा फॉरेन गले सीखिबा नो let India रे it's I think English is an international language, everyone knows. Eh तो वरिका the guilt of your brother is now clear. नहीं सही से तो किसी the guilt of your brother is now clear. कॉम्प्लेक्स रे कन्वर्ट करियो माने एटा अलग अलग रे भांगी दो कोनटा कन्वर्ट हबो कोथरे that your brother is guilty is now clear. फालतू नहीं मुझे तुम कहू जे the guilt of your brother is now clear. The guilt of your brother is now clear रे. The guilt of your brother is need to be converted into a complex sentence. कौन convert होगा complex sentence रे? The guilt of your brother is a simple sentence. Okay, understand. तू भावुछु is now clear ऊपर focus करछु. सेति में तो अबे लजी कौन की कारण एटा ही तो तोर गोटे दीटा सेंटेंस को एका संगे लिखा है ना तो ब्रदर रो गिल्ट ना माने तो भाई जे गिल्टी सेटा बे क्लियर हे छी सर एटा ना 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 गिल्टी ब्रदर टा क्लियर है ना तो ब्रदर गिल्टी वाले एटा क्लियर है ऑलरेडी ओके माने भाई तो तोर भावे 10 वर्ष ला चलची किए हेडलाइट भांगितला कार आज फाइनली जाना पड़ला भाई तू भांगितलो बोलिया तो जने कहला द गिल्ट ऑफ योर ब्रदर इज नाउ क्लियर माने जे मते आसी कहला तू भाई मते से कहला द गिल्ट ऑफ योर ब्रदर इज नाउ क्लियर समझ जान दे नहीं बोले कि हां दैट योर ब्रदर आउट कहला द दैट योर ब्रदर इज गिल्टी दैट इज क्लियर इट्स नाउ क्लियर सेम थिंग but it out a complex sentence, it out a simple sentence. Okay, next right tolguja okay practice unsolved very nice it is solved okay Abhishek if you work hard you will succeed simple sentence kariya you will succeed if you work hard. Everyone knows that the earth is round. That the को तू क्या कन्वर्ट कर का that काट दो जोचू सेंटेंस रो that the earth is round काटे हो चाहूँ earth is round and everyone knows about अब हेडफोन कॉम्प्लेक्स रहेला ना earth is round earth is round it is known to everyone that the earth is round it is known to everyone that the earth is round काटियो चाहूँले everyone knows that कौन करछा मेथरे simple टा complex करछो ने everyone knows that the earth is round it is known to everyone that the earth is round Atuka correct change into positive sentence Rajdhani Express is the fastest train positive करे रची ना ना सुपरलेटिव अछि तो फास्टेस्ट को हमें
Rajdhani Express is faster than rest of all the trains. There is no other train as fast as Rajdhani Express. आंसर कितने कंसीडरेबल ठीक तो लाइन हाँ बट से जो बाकी गुड़ा जोड़ देला सेटा नथिला ना गिवन और रे गुड आंसर अछि नो अदर ट्रेन इज एज फास्ट एज राजधानी एक्सप्रेस 8 hours I don't like this no other train is as fast as Rajdhani Express you got it removing 2 this tea is too hot for me God that I cannot Arcon Huh? is so hot so that I cannot. is too katuba This tea is so hot that that I can't कौन ताबले कौन नहीं ये तो मिसेज आपन बोलो से मिस कर दो सर ठीक है आंसर दे I cannot take it टेक इट करो I cannot have it भी ହେଇପାରିବ for me. I cannot drink it भी ହେଇପାରିବ okay next Abhisha coming to me Anita delivered the letter compound रे convert करिया माने एटी compound माने बेसिकली कमा उडी जो चलो जोड़ी दो जोड़ी दवा and neither nor okay हाँ Anita coming to me Anita delivered the letter came to me and delivered the letter me and delivered the letter weird thing coming to me Anita while she was coming she delivered the letter हाँ Anita came to me and delivered the letter okay transform the given sentence into complex buy one shirt and get one free complex नहीं ट्राई करना भूले ले कौन है का buy one shirt and get one free कॉम्प्लेक्स करवा कॉम्प्लेक्स सिंपल अच्छी है ए सिंबल अच्छा है कॉम्प्लेक्स बाय वन शर्ट टू गेट एंड टा काटिबा में कोन बाय वन शर्ट टू गेट वन फ्री If you buy one shirt, you get one if you buy one shirt you get one free ए कॉमा देकी करियो जटिल सॉल्व एक्सरसाइज रीऑर्डरिंग हाँ note making. नोट मेकिंग अच्छी कर दवा एटा सार दवा तो ए क्वेश्चन ओडा ए थोड़ा आसीबो एग्जाम रे लिखि दियो मु फास्ट करे जान कामसी मोड फिजिक्स करी एग्जाम रे एनएलएम रिवाइज करी बसी कोई काम करो यूट्यूब रे जीवो सर्च करियो गप्पड़ा सुनिबो एनएलएम कर गप्प सुनिके एनएलएम करियो गप्प तो माने सुनी कोले कुंटे कोन जा करता है स्टोरी जानी गले करे कि लिखी है ना वो भी लिखती थी सेम एग्जाम में तेरे देखते नहीं मिलला 2 मार्क्स 5 मार्क्स एक्चुअली इंग्लिश रे भलो करिया कले तते बेसिकली सब तक स्टोरी भी जानिया दरकार सब तक क्वेश्चन आंसर्स को फ्रेम करिया दरकार तते एटा जानिया दरकार कि मु गोटे आंसर टा प्रिपेयर करबी एटा पढले भी सेटा लिखबी एटा पढले भी सेटा लिखबी सेटा पढले भी एटा लिखबी स्किल भी थी सेम जो स्किल था भी हां बट आंसर मुझे कह दे समरी लिखबी वो चैप्टर रो चैप्टर रो पूरा होल्डर समझ ले तू जतले क्वेश्चन आसी सेइतुर केते बास यस 5 मार्क्स के 5 जण स्पेसिफिक सेम भी काय बोला तो सेम ଟିକେ expand कर दो ଟିକେ ସେ ଆଗର ଟିକେ expand कर भी ठीक है फ्रेम क्लास की माध्यम से काई आसीओ ने आसीओ प्रैक्टिस करना पड़ेगा आज ही स्टार्ट कर है कहा मतलब इस फ्रेग्रेंस सैंडलवुड एंड फॉर मेडिसिनल पर्पसेस वैल्यूड इट्स each slash fragrance slash sandalwood for medicinal properties valued it है ना valued जंबल वर्ड्स jumble rearrange
चारटा ऑप्शन Sandalwood is valued. Medicinal. Difference कौन सी मिला है? Because the difference अच्छी. Fragrance is not a property. Medicinal is a property, right? The answer B होगा. Is valued for its fragrance and medicinal properties. Next. खाली सैंडलवुड लगी गई ना कौन तो गोटे कम कर पीडीएफ रे जितक अच्छी गोटे गोटे थोड़ा करदेव हो करूनी सेमती करूनी नोट मेकिंग द ଯଦି ମୁଁ ପଢିକିନା ବି ମାନେ ନ ପଢିକିନା ଫେରିଲି ମାନେ ନ ପଢିଲେ ବି ଯଦି ପଢିକିନା ବି ମୁଁ 23 ଆସି ତ ତାପରେ କଣ ଲାଇଫ ନାଇଁ आराम से रही जाऊ ताठू अधिक कौन कि इंग्लिश रे कौन जे मु तो इंग्लिश रे मन अछि 1 डे बिफोर ही मु पढे आ शब्द चैप्टर पढिବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ बस ମାନେ ଇଂଲିଶ ନାହିଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପଢିବି ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ना गप सुनिया को इच्छा अछि ना नहीं तोर ଆଜି କି ଶୁଣିବାର ନା ମାନେ ସେମାନେ କିଛି ବୋଧେ କି ଆଗ ମାନେ ଗପ ବୋଧେ ମାନେ ତାପରେ ବୋଧେ କି ଇତରେ ଯୋ ସିଲି ୱାର୍ଡ ଲାଗିଲା ତ ମେଟାଫୋରା ଏଗୁଡା ବୋଧେ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ ଏଟା ଇଏ सब चार जीपीटी चैट जीपीटी को कहू गप सुनिया में एक्सप्लेन 5 करोड़ कौन करेगा पढ़े को ऐसे हाँ कौन पढ़े इंग्लिश हाँ पढ़े देवी कौन नोट मेकिंग क्लास 11 कौन इंग्लिश कौन नोट मेकिंग नोट बनाओ सेमेस्टर से हार्ट रोड क्वेश्चन को ना हार्ट सर्कुलेशन है मैं एक्चुअली नोट बने के एक्सरसाइज पढ़ते दैट सिर्फ एक्सरसाइज और तो जीरो भी मिल रहा है जिससे कौन केम दे टाइटल ପାଇଁ କି ଗୋଟେ ମାର୍କ ଅଛି ନମ୍ବରିଂ एंड इंडेंटिंग ପାଇଁ କି ଗୋଟେ ମାର୍କ ଅଛି की ग्लोसरी ପାଇଁ 1 मार्क ଅଛି नोट्स ପାଇଁ କି 2 मार्क ଅଛି एटा कौन है जिससे कौन नोट मेकिंग राइटिंग पार्ट रो गोटे अछि ना नोट मेकिंग ए गाइस आई एम लाइव प्लीज बी साइलेंट तो टाइटल दो 1 मार्क मिलियो देख देख इजीएस्ट 5 मार्क्स एवर सिक्योर्ड टाइटल दो 5 मार्क मिलियो नंबरिंग दबु 1 अच्छा नंबरिंग केम दबु 1 ता तळे जे तळ किछ लिखुछु 1.1 ता तळे जदि किछ लिखुछु माने 1.1 भीतर की गोटे पॉइंट अछि तोर 1.1.1 जो हमारे थ्योरी बाय रहता है हां जेम जो सेमती 1.1 और 1.2 है सेटा हबो जदि नेक्स्ट पॉइंट को पढिलु जे ता भीतर भी गोटे पॉइंट अछि तोर दीटा पॉइंट अछि 1.2 रे 1.2.1 जदि हबो जदि दीटा पॉइंट ता भीतर भी आसला अरे मु जेमती नोट्स बनै छी सेमती हबो खाली नंबर इंटा टिक करू मु नोट दे नतली पे बनै थर्मोडायनामिक्स और जेमती एग्जैक्टली से वेळा करा छी खाली कारण जानि जाते ये माइंड मैप एटा ही नोट भाई नोट एग्जांपल दोज बस एग्जांपल गोटे कर देले हिजो देवी और सज्जनों एग्जांपल देखो चलो गो पढ़ दवा द टेस्ट ऑफ लाइफ आर इट्स प्लस फैक्टर्स माने लाइफ जो टेस्ट नहीं है सेटा ही लाइफ रो कोन प्लस फैक्टर्स ओके ओवरकमिंग इलनेस एंड सफरिंग मोल्ड्स कैरेक्टर जितना तुम सफर करोगे और इलनेस ओवरकम करोगे उतना तुम्हारा कैरेक्टर स्ट्रांग होगा स्टील is iron plus fire soil is rock plus heat sometimes the plus factor is more readily seen by the simple hearted Maya tells the story of a mother who brought into her home as companion to her own son a little boy with a hunchback she had warned her son to be careful not to refer to his disability hunchback माने जो पछवाटे उठी के जाए एमती झुकी के था yes the boys were playing after a few minutes she overheard her son to say son say to his companion do you know what you have got on your back जानछु तो पछवाटे कोनटा अछि the little boy was embarrassed but before he could reply his playmate continued it is the box in which your wings are and someday God is going to cut it open and then you will fly away and be an angel okay often it takes a third eye or change in focus to see the plus factor
Walking the corridors of a hospital recently where the patients were struggling with fear of pain and tests, I was perturbed. What perturbed? What gave me a fresh perspective? Where the saying petrified was she perturbed? Petrified, you know, petrified. We are where the sayings put up everywhere, intended to uplift. One saying made me conscious of the beauty of the universe in the midst of pain, suffering, and struggle. So, what a hospital में pain, suffering, struggle था, right? ये quotes लिखा है तो सब कांथारे इनसे सब quotes लिखा है तो ना ये जिंदगी कांथारे तो ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଥିଲା ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗିଲା. The other saying assured me that the God was with me when I was in deep water and that no troubles would overwhelm me. तो से गोटे कोर्स गोटे एक्सप्लेन करनी कोर्स तार भीतर कौन फीलिंग्स आसला तो से लिखी. Okay. The import of those sayings also made me aware of the nectar springs that flow into the pupil's labs. Now you can see that each and every paragraph is different from the other. Right? So you need to give it a title. On the title eko. Huh? तो कहून गोटे टाइटल एते भाबुछु लाइफ रहा दरकार आउ कौन boon and suffering life boon and suffering आउ कौन है परिबा टाइटल देख टाइटल में 1 मार्क मिलेगा the tests of life ए कौन लिखा है लाइफ इंक्लूडेड रहा दरकार इट्स अबाउट लाइफ लिखा है कौन the tests of लाइफ है टाइटल एबे मु कौन कहली 1.1.1 एंत लिखा है ना तो एबे तू देख ये गोटा को भीतर पुणी बहुत जिनस जाई से लेयर्स को फर्स्ट पैराग्राफ रे फर्स्ट इंट्रोडक्शन देछि तापर इंट्रोडक्शन देके हमको गोटे स्टोरी जन को लोकर विषय कहि ता भीतर से स्टोरी जाइछि से स्टोरी रे घटितबा घटना आइछि ता माने मेन जिनसटा कोन है ठीक फर्स्ट पैराग्राफ रे मेन जिनसटा हला कोन द नेसेसिटीज ऑफ द टेस्ट ऑफ लाइफ फर्स्ट पैराग्राफ ता कहा विषय रे टेस्ट ऑफ लाइफ काहे इंपोर्टेंट सेटा लिखा है ना काहे इंपोर्टेंट काहे लिखा इंपोर्टेंट रे मोल्ड्स कैरेक्टर ओवरकमिंग इलनेस हम जति के फाइट करबा सेति के हम कैरेक्टर कोन हबो स्ट्रांग हबो राइट तो दरकार हम फर्स्ट रे देखु कि भाई नेसेसिटीज ऑफ टेस्ट ऑफ लाइफ ता भीतर हम जाउ कोन इलनेस मोल्ड्स कैरेक्टर इलनेस एंड सफरिंग मोल्ड्स कैरेक्टर जो कैरेक्टर टा को जदी तू सीटीआर करी लिख देलु नहीं 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 तू लिखिबू तापर तळे की ग्लोसर देबू CHAR CTR हैला तोर कोन कैरेक्टर कुल लिखिबू ब्रैकेट नहीं तळे लिखाबो ग्लोसरी कहीं तोर एडिट एब्रिविएशन एमती गोटे टेबल करिवू ए लिखिबू कैरेक्टर डॉट हैला कैरेक्टर पॉजिटिवली डॉट हैला पॉजिटिवली साइकोलॉजिकली डॉट हैला साइकोलॉजिकली एंड हैला एंड बुझी बोले कोन करियर अछि कोन करियर अछि बुझी परछो पहले सेकंड पैराग्राफ ता सिन कहा विषय थिला सिंपल हार्टेड व्यू डिसेबिलिटी तापर चेंज इन फोकस सेइंग्स इन हॉस्पिटल कोन सेइंग्स इन हॉस्पिटल अच्छा 1.1.1 भी करि परिबो एमती भी लिख परिबो 1A bit 1 सेटा हले हमको मोर मन अछि पढिली नोट मेकिंग पढिले मते 11 थरे से कहले कि आगो 1 नोट मेकिंग नो एटा मु करथली मोर जो डिग्री कली ना सेठी हमर थाय गोटे रिसर्च वर्क रे आई हैड टू कंट्रीब्यूट समथिंग टू द आर्किटेक्चर वर्ल्ड तो आई हैड टू राइट अ रिपोर्ट माने गोटे इनोवेशन फ्रॉम माय एंड दबार थिला मते सेथरे एमते लिखा जाय 1.1 1.1.1 एमती कर लिखा हुए तापर लास्ट को मु जदी गोटे इमेज लगै सेटा कोड आसिला सेटा भी देखिया होता है माने फॉर एग्जांपल लेट्स मु इमेज नहीं कर देली देखिया पड़ले भाई टीचर रू नहीं थली एटा नॉले भाई दे विल से हां सोर्स को नॉले से कहबे कि भाई एटे भाई छे ये ओरिजिनल वर्क रहे तो तमे एटा लिखिबो ना तो तू एमती डॉट डॉट कर लिख गोटे दिटा लिख दू बड़ बड़ वर्ड को छोटा करके तळे लिखि दबु एटा लिखिची माने हला एटा बुझि परछ हां मार्क अछि इन देखिली बा केते मार्क थला 1 मार्क थला की ग्लोसर रे आई नोट स्टार मार्क 2 मार्क मात्र टाइटल 1 मार्क सब पॉइंट्स को ठीक से लिखि परछ ना 1 मार्क
तापरे तोर लास्ट को एब्रिविएशन हला 1 मार्क 3 मार्क पड़ेला आ टोटल जो लेखाडो लिखिलु सेटला 2 मार्क मो कथा बुझी पालो फॉर्मेट टाइटल लिखिबो हां कोन बुझी पालो तो हां इस मास जो लेखाटा देखिले से ना से तोर जो हाँ ताले लिखिबो ना कोन जेतरे ये तो किछ नहीं तू लिखिबो एटा टी भूल लिखि चला 1 एटा एटा हबो 2 एटा हबो 3 एटा हबो 4 फाइन एटा 1 2 3 4 चारटा पैराग्राफ अछि 1 2 3 4 ता तळे तू लिखिलु कोन इलनेस और सिंपल एक्टिव विषय तो एटा हबो 1.1 एटा हबो 1.2 एठी तू लिखिलु कोन एटा हबो 1.1 ता भीतर एकु लिखिलु तो 1.1.1 लिखिया ना 1.1 तो इच्छा मो हिसाब रे 1.1.1 वाला लिखले बेटर तते मार्क मिलबो हाउ ये क्लियर तबे लास्ट में डबा कर दबो एसएल नंबर एब्रिविएशन वर्ड मोडा पठे दोची एटा कर दबो गोटे दिटा निजे गोटे दिटा कर दबो देखिबो किंती नोटर किंती अलगा अछि सेती कर दबो दी हेजियो गोटिए कर दबो हेजियो डन नोट मेकिंग हेगला खाली टाइम रे कोन करिया मु कहू छी जा जाई कि एनएलएम बाहर करिवो